Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss the remaining part of mitochondria. So let's move to the lightboard. So dear students, mitochondria the powerhouse of the cell. Here. So in the previous lecture, we have discussed about its morphology, its structure, about its membrane, cristae, mitochondrial matrix, and some of the things they were remaining. So we will discuss in this lecture. So mitochondria consists of, as we have mentioned before, in the mitochondrial matrix. तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से, that is a fluid in the mitochondria that consists of numerous things. The enzymes, number 2, the coenzymes, number 3 are the DNA, number 4 the ribosomes, clear, and the F1 particles as well, clear. So dear students, यहाँ पर जो enzymes और coenzymes हैं, one more thing, that is inorganic salts. Yeah. So the major components of the mitochondrial matrix. So enzymes and coenzymes, basically they are involved in the oxidation reactions. So these enzymes are involved in the oxidation of food and converting them finally into the ATP. While DNA, so as they have their DNA, the self-DNA, so if they have their DNA, so they are self-replicating organelle. Clear? So as they have their own DNA, so they are self-replicating organelle. तो dear students, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? Why they are self-replicating? तो चूँकि हमने पहले भी बात की कि as per the requirement of the cell, जिस सेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी, let's suppose you are running your skeletal muscles, your thigh muscles, your leg muscles, and your respiratory muscles, and they need more energy while running or while doing something laborious work. So in that very situation, the cells, they will use their mitochondria, and with the mitochondria, it will be replicated in order to provide more and more and more energy. Yeah? तो जितनी ज़्यादा जहाँ पर एक्टिविटी होगी, फिजिकल एक्टिविटी होगी, तो वहाँ पर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और उतनी ही ज़्यादा एनर्जी कैसे मिलेगी? जब नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इंक्रीज कर दिया जाएगा. और नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया किस तरह से इंक्रीज करवाया जाएगा कि इसके पास अपनी कॉपी मौजूद है, डीएनए मौजूद है, इसके कॉपीज़ बनवाई जाए, माइटोकॉन्ड्रिया की कॉपीज़ बनवाई जाए. और इसके साथ they also possess ribosomes, so it suggests
As it has ribosomes, some ribosomes, they are involved in protein synthesis. Means कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस भी हो रही है क्योंकि इसके अंदर राइबोसोम्स हैं और राइबोसोम हम पहले पढ़ चुके हैं, उनका तो मेजर फंक्शन है दैट इज द प्रोटीन सिंथेसिस, और वो किस तरह से होती है वो डिटेल के साथ हमने डिस्कस कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, एक और चीज़ यहाँ पर जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, ये मुख्तलिफ तरह के जो केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के उसको बनाने में हेल्प कर रहा होता है। क्लियर? जिस तरह से एनर्जी है द एटीपी उसको कन्वर्ट करने के लिए इनटू एटीपी। Now the composition of if we talk about the composition, the chemical composition, more precisely, the chemical composition of mitochondrial membranes So dear students, the membranes of mitochondria resembles to the membranes of other cell organelles. Clear? The inner membrane, which is specifically mentioned in our book, the inner membrane of mitochondria is composed of lipoproteins. So dear students, आपको याद आ गया होगा चैप्टर नंबर 2 लास्ट टॉपिक द कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, उसमें हमने पढ़ा था glycoproteins and the glycolipids and the nucleoproteins and as well as the lipoproteins, और वहाँ पर मैंने ये बात की थी कि जो lipoproteins होती हैं they are the components of the most of the cellular organelles. Clear? जो organelles होते हैं उनकी जो membranes होती हैं they are usually made up of lipoproteins, और इसी तरह से जितने भी organelles हैं most of them उनकी जो chemical composition है that resembles with the mitochondria. Clear? So ये specific है, important MCQ है from anti-test point of view as well as from the board point of view. Specifically mentioned inner membrane. Clear? So that is made up of lipoproteins. And what are lipoproteins, dear students? You know very well. That is lipids plus proteins. When they become conjugated chemically, they form the lipoproteins. Clear? One more thing, dear students, that is related to mitochondria, that is the respiratory chain, or which is also called as electron transport chain. Clear? Which will be discussed in detail in chapter number 11, bioenergetics, the second last topic of bioenergetics. Clear? Chapter number 11, इंशाल्लाह उसमें डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा the respiratory chain. So aerobic respiration here,
The aerobic respiration, dear students, it occurs in the 4 steps. इसको मैं कंप्लीट करता हूँ ताकि यहाँ पर पहले उसका आपके कॉन्सेप्ट्स के वाले से. So aerobic respiration, as far as it is concerned, so dear students, what is aerobic respiration? The respiration which takes place in the presence of oxygen is called as aerobic, as well as which occurs in the absence of oxygen, that is called as anaerobic respiration. So as far as aerobic respiration is concerned, it is completed in 4 steps. The first step is glycolysis. The second step is oxidation of fatty acid or pyruvate, the second step. And the third step is Krebs cycle, which is also called as citric acid cycle. And the fourth step is respiratory chain. तो डियर स्टूडेंट्स, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए. सो द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, इट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म में भी इसका जिक्र आया था, ठीक है. वहाँ पर जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, दैट इज द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड. और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स यानी कि पायरुवेट, एंड देन क्रेब्स साइकिल, and finally the respiratory chain. All these 3 reactions, they occur in mitochondria. They occur in mitochondria. ये 3 steps mitochondria में होते हैं और ये वाला step cytoplasm के अंदर होता है. So जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सारे step में क्या होता है कि 1 glucose is broken down into 36 ATPs. एक ग्लूकोज से 36 ATP बनते हैं और वो 36 ATP में से majority of the ATP they are formed inside the mitochondria. Clear? Mitochondria के अंदर वो बनेंगे. तो यहाँ पर वो respiratory chain की बात हो रही है. The respiratory chain or electron transport chain is present in the inner membranes of mitochondria. तो वहाँ पर मौजूद है और that is responsible for the conversion. और इस चेन पे होता क्या है? That in this chain NADH and FADH2. NADH stands for nicotinamide adenine dinucleotide. While FAD stands for flavin adenine dinucleotide. Clear? तो जो ये 2 हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स NADH और FADH, they are passed on to the electron transport chain or the respiratory chain and their energy is used in the conversion of or formation of ATP. तो इनसे ATP बनाई जाती है. Clear? So that is why, चूंकि यहाँ पर ATP synthesis हो रही है, so that is why it is called as the powerhouse of the cell. क्योंकि हमें पता है energy currency for a cell is only ATP. That stands for adenosine triphosphate.
दैट इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो जब भी सेल को एनर्जी चाहिए तो इस शक्ल में चाहिए, और ये कौन बना रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। क्योंकि एरोबिक रेस्पिरेशन के, सेलुलर रेस्पिरेशन के 4 में से 3 मेजर स्टेप्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर हो रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के। इट मीन्स if the mitochondria is not working properly, or damaged, clear, Krebs cycle and electron transport chain and oxidation of fatty acids, these will fail to perform. Clear? ना क्रेब्स साइकिल चलेगा, ना ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी, ना ही ऑक्सीडेशन होगी फैटी एसिड्स की, यानी पायरुवेट आइसिटाइल कोए में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा अगर माइटोकॉन्ड्रिया खराब है या वो सही तरह से वर्किंग नहीं कर रहा। तो मतलब if this system is shut down or fail means that means no ATP, means load shedding, means no energy, and the cell will very sooner or later the cell is going to die. Clear? So that is why a mitochondria, it plays a very, very vital and important role in the cell, so providing the energy. Clear? Dear students, one thing more that is related to F1 particles. तो कहाँ पर मौजूद है डियर स्टूडेंट्स? प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। दे आर प्रेजेंट अलोंग द, दे आर प्रेजेंट और दे आर लोकेटेड at the inner membrane of mitochondria. Clear? Inner membrane मौजूद हैं. Clear? And their function is to synthesize ATP. ठीक है? और बेसिकली मैंने बात की थी कि F1 particles बेसिकली दे बिहेव एज एंजाइम, और ये कौन सा एंजाइम एंजाइम के तौर पर बिहेव करते हैं? दैट इज ATP सिंथेस। इसी वजह से कई जगहों पे आपको मिलेगा कि दे कंसिस्ट ऑफ the F1 particles, they consist of ATP synthase. So ATP synthase, that is an enzyme which is involved in the formation of ATP. इसके अलावा dear students, the mitochondria are also involved in the formation of ATP from, that is what I'm going to tell you, that is important, from spent energy. From spent energy, जो एनर्जी खर्च हो चुकी है उससे दोबारा ATP बनवाई जाएगी, and that word spent energy is ADP, adenosine diphosphate. So माइटोकॉन्ड्रिया में क्या किया जाएगा? ADP plus inorganic phosphate, it is then converted into ATP during various reactions. In this reaction, तो कहीं पर डायरेक्टली बन रही है और कहीं पर फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जरिए बन रही होती है. Clear? So that what happens on the mitochondria. So how you are going to draw it? Look at
this diagram very carefully. So this is what I'm going to draw, the mitochondria again for you only. You can also draw like this. So this is mitochondria, and it is containing the DNA and some ribosomes. Clear? And going to label it. This is outer membrane, inner membrane. ये सिर्फ आप लोगों के लिए दोबारा ड्रॉ किया ताकि आपको ड्रॉ करना आ सके. This is DNA, ribosomes, the main markings over here, and this is the crista here, and this one is the outer compartment. Clear? And this is the inner compartment. दो compartments याद रखिएगा, ठीक है? Outer compartment that is present between the outer and the inner membrane, while the inner compartment is present inside the mitochondrial matrix or the crista. Clear? So that is the diagram of mitochondria. So dear students, hopefully mitochondria के हवाले से आपको किसी भी तरह की confusion बाकी नहीं रही होगी. उम्मीद है hopefully सारा लेक्चर क्लैरिफाई हो गया होगा. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे प्लास्टिड्स को. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.